Hello and welcome to BrainBridge UPSC. I am Vaibhav Kulshrestha. This is answer writing program for Geography GS and this is the 14th question of this series. The question is, what do you understand by the phenomena of temperature inversion in meteorology? How does it affect the weather and the habitat of the place? This question was asked in 2013. So this question is related to climatology unit in geography. So if we talk about the theme of the question, then it is temperature inversion. It means in answer format in introduction part, we will write about temperature inversion. What is the meaning of temperature inversion? We will write about it. Okay. Then come to main body part. Then the second question of this, a second part of this question is, what is the effect of temperature inversion on weather, and what is the effect of temperature inversion on habitat. ठीक है, तो इसको हम दो पार्ट में लिखेंगे. So, effect on weather and effect on habitat. We will write about it and then in conclusion we will sum up the question. Now, in introduction part, temperature inversion is in meteorology is a phenomena where normal temperature profile of the atmosphere is inverted. It means in troposphere normally temperature is inversely proportional to height, or you can say altitude. As altitude increases, temperature decreases at the rate of 6.5 degrees centigrade per kilometer. So this is called positive lapse rate. This is positive lapse rate. While in temperature inversion, temperature become directly proportional to height or altitude. It means as height increases, temperature will also increase, and it would be negative lapse rate. This is negative lapse rate. तो ऐसा जब होगा, then it is called temperature inversion. Under normal condition, temperature decreases with altitude. During a temperature inversion, a layer of warmer air sits above the cooler layer of air near the surface. तो नीचे टेम्परेचर कम होगा, ऊपर जैसे हमारा एल्टीट्यूड बढ़ेगा, हाइट इंक्रीज होगी, टेम्परेचर विल इंक्रीज. दिस इज द मीनिंग ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन. नाउ कम टू द कॉजेज ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन. सो मेन बॉडी में हम इसको भी डिफाइन कर सकते हैं. फर्स्ट इज रेडिएशनल कूलिंग. ऑन क्लियर नाइट्स, क्लियर and long nights, the ground loses its heat rapidly, cooling the air close to the surface. This can lead to the development of a cooler layer of air trapped under a warmer layer. Second, frontal inversion. When warm air mass moves over a cold air mass, the boundary between them can create an inversion. Means नीचे क्या हो? This would be cold air mass and वार्म एयर मास ऊपर अपलिफ्ट हो जाए इसके. देन इन दिस कंडीशन टेम्परेचर इसमें भी यहां पर होगा इन्वर्जन. थर्ड वन इज सबसिडेंस इन्वर्जन. सिंकिंग एयर इन अ हाई प्रेशर सिस्टम compresses and warms, forming a warm layer above cooler air near the surface. These are the causes. You can also write about the ideal conditions in which temperature inversion could take place. उसको भी आप लिख सकते हैं. Now come to the main part, main body, that is effect on weather. First, stable conditions. Temperature inversion create stable atmospheric conditions, suppressing vertical mixing. This can lead to calm weather and a lack of precipitation. Second, fog formation. The trapped cool air can hold moisture, leading to the formation of fog or low stratus clouds. Third one, smog.
जब फॉग फॉर्मेशन होगा देन फॉग प्लस स्मोक becomes smog due to air pollution. So pollutants from vehicles, industries and other sources can become trapped under the inversion layer, leading to poor air quality and converted into smog. Fourth, reduced visibility. Fog and smog reduce visibility, which can affect transportation and daily activities. So this is the effect of temperature inversion on weather. Now come to the habitat part, means effect of temperature inversion on habitat. Health impact. Prolonged exposure to polluted air can lead to respiratory problems, cardiovascular issues and other health concerns. ऐसा क्यों हो रहा है? पीछे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जो कोल्ड एयर है, नीचे क्या है? दिस इज कोल्ड एयर, यहां पर क्या है? वार्म एयर एट सम एल्टीट्यूड, एट सम हाइट। कोल्ड एयर इज डेंस्ड, हायर डेंसिटी होगी। इसकी डेंसिटी क्या है? इसकी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी थोड़ा सा कम है। तो ये डेंसिटी जब ज्यादा होगी तो इसकी टेंडेंसी होगी नीचे रहे, कोल्ड एयर। और जितना पॉल्यूशन को इसने ट्रैप करके रखा है वो स्टेबल रहेगा। दैट इज वाई द फॉग मॉइस्चर विल कन्वर्ट इनटू फॉग एंड फॉग प्लस स्मोक becomes smog, then there would be some respiratory problem, cardiovascular issues and other health concern also. Second, agricultural impact. Frost can form under clear skies when the surface cools rapidly and it will potentially damage the crops. Third, energy use. Inversion can influence heating requirement, increasing energy demand during colder period. आपको अपने रूम में हीटर वगैरह लगाना पड़ेगा। देन दिस इज द इफेक्ट ऑन हैबिटेट। फर्दर आप बता सकते हो जब एनर्जी चाहिए तो फिर आप उसके लिए बिल भी ज्यादा पे करोगे। नाउ कम टू द कंक्लूजन पार्ट। अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिडिक्टिंग टेम्परेचर इन्वर्जन आर क्रूशियल फॉर वेदर फोरकास्टिंग, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एंड पब्लिक हेल्थ प्लानिंग। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इट मीन्स जो दिवाली के बाद हमारे दिल्ली में होता है, दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी वर्सन हो जाती है, बहुत ज़्यादा पुअर क्वालिटी होती है एयर की। उस वक्त भी यही कंडीशन है, टेम्परेचर इन्वर्जन। कोल्ड एयर मास इज स्टेबल एंड इट इज जस्ट अबव दी दिल्ली एनसीआर, और वहां पर जितना भी पॉल्यूशन है वो उसके अंदर भरा हुआ है। इट इज लाइक गैस चैम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि दिल्ली बिकम्स अ गैस चैम्बर। क्यों? क्योंकि कोल्ड एयर मास फिर शिफ्ट नहीं होता है इधर से उधर, और उस वक्त जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर है और वर्टिकल मूवमेंट ऑलमोस्ट स्टेबल हो चुका होता है। सो दिस इज द कंक्लूजन पार्ट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज like, share and subscribe. Thank you.